गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम। आज आ गए हैं हम लोग फिर से एक चैप्टर एक्सप्लेन करने के लिए। उस चैप्टर 7 है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो आज हम इस चैप्टर को समझेंगे क्या बताया हुआ है इसमें। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। इट इज only after growing up a certain age that humans being after many other animals reproduce. Why can human reproduce only after certain age? क्यों ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं एक सर्टेन एज के बाद, है ना। तो सबसे पहले तो हम चैप्टर का नेम समझते हैं, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज में क्या होता है? एडोलेसेंस मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो प्यूबर्टी। टीन एज में क्या होता है? ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज। एक नियमित एज पे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ह्यूमंस, जो कि होती है टीन एज। जब तक उनमें प्यूबर्टी आ जाती है, उनके सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में ये। इन द चैप्टर विल बी लर्न अबाउट take place in the human's body after which a person become capable of reproduction. In chapter 6 you have learned about human reproductive organs. Here we shall discuss the role of hormones. In a certain age, friend left भोजा and पहली बेगन छत्तीसगढ़ with their। तो अब हम इसे समझेंगे एडोलेंस एंड प्यूबर्टी। तो देखते हैं आगे। भोजा was celebrating his 12th birthday after his friend left Bhoja and Feli began Chhattisgarh with their parent. Pehli studies is an all girls school. She started loving. She remaked the many of Bojo school friend whom she met after a year had suddenly shot up at a height. Some of them looking very funny, hairs lying above their lips. Her mother explained that the boy had growth beginning from the day one is born, but upon crossing the age of 10 or 11, there is suddenly spot its growth will become noticeable. The change taking place in the body are part of growth up indicate the you are। इसमें बताया गया है कि वो जो गर्ल थी उसकी हेयर्स बढ़ना बंद हो गए या बहुत कम बढ़ रहे थे, और उसकी फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट ओनली वे बिकम अ अडल्ट। जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमें वो हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं जिससे हम लोग प्यूबर्टी में जाते हैं। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मेक्ड बाय चेंज इन द बॉडी विथ लास्ट। इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ with you neither a child nor adult. I wonder whether this period between child and adult has a special name. Growing up in a natural process, ये एक natural process है अपनी जिंदगी की। Body undergoes change leading reproductive, ये इसमें हम mature हो जाते हैं। और adolescence कहते हैं इसको ही। Adolescence begin around the age of 11 से 19 के बीच में होता है, टीनेज के बीच में 13 to 18, और 19 years लास्ट होती है इसकी स्टेज। Adolescent are also called teenage in girls. Adolescence may begin a year or two earlier than in boy. गर्ल्स थोड़ा जल्दी प्यूबर्टी में आ जाती है बॉयज की कंपैरिजन में। बॉयज 2 साल बाद में आते हैं। Also the period of adolescence from the person to person. The human body undergoes several changes during adolescence. Their change mark the onset of puberty. The most important age which mark puberty is boy and girl become capable to reproduction puberty and when the adolescence reach reproductive maturity। इसमें क्या होता है कि हम कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। वो एज हो जाती है ये टीन एज में।
इसलिए पुराने टाइम पे लोग अपने इसलिए पुराने टाइम में लोग हम अपने बच्चों की शादी जल्दी कर देते थे, तो बाल विवाह, क्योंकि वो तब प्यूबर्टी कंप्लीट हो जाती थी उनकी, इसलिए। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं। पहली एन भोजा realized a sudden increase in height and hairline above the lip in boys signs of adolescence. They want to know more about other change at puberty. देखो, इसमें बताया है पहेली और भोजा में कि उनके हेयर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे बॉयज के कंपैरिजन में। कुछ चेंज नहीं आया था बॉयज को तो प्यूबर्टी में, लेकिन ऐसा क्यों? ये प्यूबर्टी है क्या? The tellest who might be shortage in your class of full height, age in year 8 बॉय की 72, गर्ल की 77, 11 में गर्ल की 88, बॉय 81, 16 में 1995 गर्ल की और 98 ऑफ फुल हाइट ऑफ बॉय की, और 18 में दोनों की 100%। लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, इसलिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। This is not need पहली to worry. All part of the body do not grow at same rate. देखो, बॉडी के सारे पार्ट सेम रेट में ग्रो नहीं होते हैं, कोई कम या ज्यादा। समथिंग द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड एट फीट adolescents लुक ओवरआइज्ड। हाथ और पैरों का साइज बढ़ जाता है, आर्म्स का proportion with the body, but soon other part of catch up result proportion body. You must have noticed the height individual is more or less similar. Some family member this is because height depend on the genes inherited from parents. Inherited मतलब genetic होता है. It is however very important to eat the right kind of food. इसके लिए आपको सही प्रकार का फूड खाना चाहिए, खाना खाना चाहिए during this growing year. This help to bone muscles and other part of the body get adequate nourishment from growth. You will find nutritional need to adolescents discuss later in the lesson. इसमें हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशंस नीड क्यों होती है एडोलेसेंस में। चेंज इन बॉडी शेप. How you notice that bodies your class have broader shoulder, wider chest. That boy in a junior class. This is because they have entered the age puberty should generally broaden or result growth in girls. The regions below the breast become wider. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्यूबर्टी के एज में आ जाते हैं वो तो गर्ल्स में जल्दी डेवलप होते हैं उनके ऑर्गन्स, तो इसलिए ये सब होता है कि साइज इंक्रीज होना. In boy the muscles of the body grow more proportionally than in the girls, thus change occurring adolescence. Boy and girls are different. वॉइस चेंज हो जाती है बॉयज की थोड़ी कड़क आवाज हो जाती है कि हे तुम क्या कर रहे हो, और गर्ल्स की थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है. Begin developing large voice boxes. The growing box in boy can be seen. Called Adam apple. In a girl, the length hardly visible from the outside because its small size. Generally, girls have high pitched voice, wherever boys have a deep voice. In adolescence, voice box go out of control. Had the voice become hoarse, the state may remain a few days, weekly after which the voice become normally. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडम एप्पल जैसा हो जाता है कई बार ऐसा, क्योंकि हार्मोन्स गलत तरह से डेवलप हो जाते हैं. ये आयोडीन नमक आता है उसकी वजह से भी होता है. Increased activity of sweat and soluble gland during
puberty, the secretion of sweat gland. देखो, प्यूबर्टी के टाइम पे पसीना बहुत आता है और स्किन ऑयली हो जाती है, इंक्रीज मैनी यंग पीपल, ये सब होते हैं, लक्षण है ये। एंड पिंपल्स, पिंपल आ जाता है, फैट आ जाता है, फेस पे पिंपल आ जाता है बिकॉज इंक्रीज एक्टिविटी, ग्लैंड एंड स्किन डेवलप, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाता है, जैसा मैंने बताया था। लुकअप 6.1 एंड 6.3, जैसा हमने ये देख ही लिया प्रीवियस लेसन विच शो sex organs of humans and puberty males. Sex organs like testes and penis develop completely. The testes are also beginning to produce sperm in a girl's ovary includes. The eggs begin to mature also. Ovaries start releasing mature eggs, reaching mentally, intellectual, and emotionally maturing. Adolescence is also period of change in a person way to think. Adolescents more independent than before are also self-conscious. Interests develop take place and they are spending consistent time thinking fact, often time when brain has the greatest capacity and from learning. However, adolescents may feel insecure trying to adjust to the change of the body and mind. My body mindset change हो जाता है. But adolescents learn you should know their reason to feel insecure. The change is a natural part of growing up. ये एक नेचर की प्रोसेस है. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यू हैव लर्न चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था टेस्टिस और ओवरी के बारे में. जो बॉयज का टेस्टिस वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ओवरी वो गर्ल्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. Just produce the gamete, then in sperm, ovary in girls, breast begin develop puberty. ये ना puberty में develop कराती है. And boy begin to grow facility hair that boys के hairs जल्दी बढ़ते हैं, beard आ जाती है. Features help to distinguish the male from the female, called secondary sexual. Boy also hair that chest in boy के chest पे hair आते हैं. Both boy and girl hair growth अंदर आर्म्स, उनके अंडर आर्म्स के हेयर आ जाते हैं. रीजन्स अबाउट द पब्लिक रीजन्स. The change which occur at adolescence controlled by hormones. Hormones are chemical substances secretion from endemic gland of endocrine system. The male hormones of testosterone begin to be released by testes at a change in boy about which you have just learned. For example, the growth of facial hair once puberty is reached in girls ovary or produce females hormones exon which make the breast develop. Milk secreting glands or mammary gland develop inside the breast. The production of these hormones is under the control of another hormones secret from and adrenal gland, pituitary gland नाम इसका. Role of hormones in treating reproductive functions. Endocrine gland releasing hormones into the bloodstream to reach a particular body part called target site. The target site respond to the hormones. There are many endocrine glands, ductus gland in the body. The testis service secretes sex hormones. You have just learned that this hormone is responsible for the male and female secondary sexual character. Feature the sex hormones under the control hormones from the Pittsburgh gland. The Pittsburgh secrete many hormones of many mature, one of which make mature in the ovary sperm form in the testis. Hormones from pituitary
Stimulin tests vary to realize testosterone in male and estrogen in female. Realize bloodstream rates, target site, assuming change in the body puberty. Pehli boys have now undergoes puberty make the beginning reproduction period when capable of reproduction when they want to know if reproductive life once begin continue and some time. Reproduction phase of life in human. Androgens become capable of reproduction when the testes will produce gamete. Gamete produce करने लग जाती है वो. Capacity for maturation and production of gamete lasts much longer time in a male in female. In female, the reproductive phase of life begins at puberty, 10 to 12 years old. Age generally lasts till the age of approximate 45 to 50 years away. Beginning mature with the onset of puberty, ovum mature and is released ovary once about 20 to 30 days period. The wall of uterus become thickly receive the egg in case fertilization, beginning to develop this results in pregnancy. जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसमें जाइगोट डेवलप होता है. जो आपने पढ़ लिया चैप्टर 6 में. फर्टिलाइजेशन डज नॉट occur realizing egg and the thickened lining of the uterus along with its blood vessels outside of this caused bleeding in women, which is called menstruation. Menstruation occurs once in about 28 to 30 days. The first menstruation flow beginning puberty and it term machinery at 45 to 50 years. This menstruation cycle stoppage in term maturing internal maturing cycle may to regulate to take some time to become regular. पहल से the reproductive life of a woman lasts from mechanic to menopause. Is she right? Yes, menstrual cycle is controlled by hormones. Cycle include the maturing egg, realizing breakdown. Pregnancy does not beginning to divide and then get developed as you have learned in chapter 6. जो हमने chapter 6 में पढ़ा. How is the sex of the baby determined? I had my mom and my auntie talking about my cousin. It going to have a baby. Discuss whether she will birth to a boy or a girl. I wonder with make the fertilization egg develop it either into a boy or girl. Boy or girl. Inside the fertilization egg zygote in the instruction for determine the sex of the baby. Instruction present in like structure called chromosomes. In the fertilization egg, chromosomes are present inside the nucleus of every cell. All human beings have 23 pair of chromosomes in the nucleus of the cell. Two chromosomes out of the sex chromosome name X or Y chromosome. है ना? A female has two X chromosome while a male one X chromosome. मेल में वन एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल में दो. और मेल में एक एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है एंड वन वाई क्रोमोसोम. जैसे मैंने अभी आपको बताया द गैमेट एग एंड स्पर्म हैव ओनली सेट ऑफ क्रोमोसोम. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज अ एक्स क्रोमोसोम. एक्स को एग को हम एक एक्स क्रोमोसोम की तरह लेते हैं ना, हमेशा जब वो अनफर्टिलाइज्ड होता है तभी. स्पर्म ऑफ टू काइंड्स. One kind has X chromosome and other kind has Y chromosome. When a sperm containing chromosome fertilizes the egg, the zygote would have two X chromosomes develop into a female. Child sperm contribute a Y chromosome to egg. At the fertilization, zygote develop in a
मेल चाइल्ड। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये दोनों जा रहे हैं, ये वाई है और ये एक्स है ना। अब इसकी जगह मान लो वाई की जगह एक्स चला गया और इसमें वाई चला गया, तो क्या होगा? अगर एक्स एक्स के साथ एक्स गया तो वुमेन बनेगी और एक्स के साथ वाई गया तो मेल बनेगा। ठीक है ना। एक्स वाई गया तो बॉय बनेगा, मतलब वाई वाला गया ना तो ये बॉय बनेगा, और एक्स गए ना तो गर्ल बनेगी। ये है। अब ये पहले से हम पता नहीं लगा सकते कि क्या होगा। ऐसा होता है sex determined in humans. Now you know the sex chromosome after father determine the sex unborn baby. The belief that mother responsible for the sex of her baby in completely wrong. That blame is totally her for their totally unjustified. Chromosome other than sex hormones. Look at again the chromosome secretly visual testes and a way to produce the hormone already learned at the Pittsburgh gland to endocrine gland, the attached of the brain, apart from the Pittsburgh, the testes and the ovary and the other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenal. जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये टेस्टिस है, ये पोजीशन ऑफ द ओवरी, ये दोनों का मिला के बता रखा है। ये पिट्स ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, ये एडेनिक ग्लैंड है, ये पेनक्रियाज है। ठीक है। बोजा पहला once visit their auntie doctor. Remember the boy named Kaka had a very big bulging throat. Their auntie thyroid from gland, collect thyroid gland was not producing the hormone thyroid. Their auntie also told their uncle suffering diabetic because their pancreas producing the hormone इंसुलिन। इंसुलिन में क्या होता है कि शुगर हो जाती है। आपके परिवार में भी किसको शुगर होगी, डायबिटिक होंगे कोई, आपकी फैमिली में भी कोई देखना कभी, तो उनके अंदर ये क्रोमोसोम होता है इंसुलिन, इसलिए ऐसा होता है। Then asked their auntie about the adrenal gland, which are also shown in the chart hung wall her clinic. Secret chromosome which maintain correct salt balance in the blood. Adrenal produce the hormone adrenaline help body to just stress, very anger, embracing warrior. Fire adrenaline secret their hormone that receive other the picture thought it hormone but also secret growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. The hormone in other animals also have any role to play in reproduction. Role of hormone in complete the life history of insects and frog. You have already learned about the life cycle of the frog, tadpole and fish. At certain stage it become a frog. Chapter 6 the change for larva to adult is called metamorphosis. अगर आपने हमारी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स वाला चैप्टर अभी तक नहीं देखा है, चैप्टर 6, तो अभी हमारे चैनल पे जाके देखो, उस पर हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। कंट्रोल द इंसेक्ट्स क्रोमोसोम इन अ फ्रॉग, इट इज कंट्रोल्ड बाय focusing the hormone produced by thyroid. Thyroid produce require the presence of iodine in water in which the tadpole growing does not contain sufficient iodine, and the tadpole cannot become adult. tadpole adult नहीं होता। जब frog बच्चे देता है तो वो बच्चे ना, मतलब ऐसे मछलियों की तरह पानी में तैरते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो अडल्ट जो फ्रॉग होता है ना उसकी टेल गायब हो जाती है। मतलब डेडपूल की तो टेल होती है, लेकिन फ्रॉग की आपने देखा हो टेल नहीं होती और उसके हाथ पैर होता है।
फिर बड़े होने के बाद वो पूरा ही चेंज हो जाता है। कोई बता ही नहीं सकता टेटपुल को देख के कि फ्रॉग पहले टेटपुल था। ऐसा होता है। एंड पीपल डू नॉट हैव enough iodine in their diet will get goiter caused by lack vaccine. Reproductive health. Mental health being of individual regarding as an individual health to keep body health. Human being and age need to balance diet. The personal must also observe personal hygienic undertake six exercise during adolescence, however, become ever more essential as body in growth. Naturally need a adolescent stage of period growth and development time for an कितना बचा है? लगभग हो ही गया। आपको यहाँ तक तो सब समझ में आ गया होगा। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और चेकआउट कीजिए। उसके जो नोट्स है और सैम्पल पेपर है वो सब हमने आपको बता रखा है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। Adolescence has to carefully plan. You have already learned what a balanced diet. Recall balanced diet mean the meal include protein, carbohydrate, fat, vitamin in request proportion. Our India metal, roti, rice, vegetable in balance, milk balance itself, fruits nourish milk, provide nutrition that need iron rich food such as vegetable, jagger, citrus, India. Check lunch, dinner, you meal न्यूट्रिशन डज इट इंक्लूड सर्टेन गिव एनर्जी मिल्क खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, नट खाना चाहिए। ये हमारी जो सेहत के लिए प्यूबर्टी के लिए वो अच्छा लगता है। पल्सेस डालें, इनसे प्रोटीन मिलता है और अच्छी ग्रोथ होती है बॉडी की और ये एनर्जी भी देता है। इसलिए चिप्स पैकेट और टिनी स्नैक्स ये सब अवॉइड करने चाहिए। इन्हें रिप्लेस कर दिया गया आजकल न्यूट्रिशन वैल्यू, तो ये सब आपको खाना चाहिए जिससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। पर्सनल हाइजीनिक पर्सनल हाइजीन एवरीवन शुड हैव अ बाथ एट लीस्ट वन एवरी डे। आपको रोज नहाना चाहिए। मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर। टीनेज के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज द इंक्रीज एक्टिविटी टू स्वेट ग्लैंड समथिंग मेक द बॉडी स्मेलिंग ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश क्लीन एवरी डे। आपको अपने बॉडी का हर पार्ट हर रोज साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। Clean not maintain there are change are catching bacteria infection. Girls should take special care of cleanliness during the time of menstruation. Floors should be kept racked their cycle be repaired for the once maturing use sentence. Napkin clear homemade pad. Change pad after every 4-5 hours as per requirement. Physics exercise. Walking and playing in fresh air keeping body fit healthy all young body and girls should take walk exercise play outdoor game with taboos do as don't. You have learned here some chapter 6 the scientific facts है ये तो। Say no to drug. आपको बिल्कुल भी ड्रग नहीं लेना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है बिल्कुल भी, कोई आपसे कितना भी बोले, क्योंकि इससे आपकी प्यूबर्टी रुक सकती है, हाइट रुक सकती है और अच्छी बात नहीं है और ये इलीगल भी है। Adolescence is the period of much activity in a body mind which normally growing up so do need feel consume in sexual suggest that you will relieve to sell some drugs just say unless drug feeling like taking them again कि उससे आपको उनकी लत लग सकती है और आप फिर बार बार लोगे कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी इससे। यू मस्ट हैव अबाउट एड्स। आपको एड्स के बारे में पता है? ये एक डेंजरस वायरस है, HIV भी नाम है इसका। कैन पास ऑन अ नॉर्मल पर्सन शेयरिंग स्टेरॉइड ने यूज फॉर इंजेक्शन ड्रग या ड्रग के इंजेक्शन लेने से या फिर इन्फेक्टेड मदर का मिल्क पीने से द वायरस कैन बी ट्रांसमिट
ट्रांसपोर्टर सेक्सुअल कंटेंट पर्सनल इन्फेक्शन विद HIV। ये अमेरिका में बहुत फैला था और ये बहुत खतरनाक वायरस एक कीवर्ड से जो कि आप लर्न कर सकते हो। हमारी ये एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस का आज आप आंसर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ एक क्वेश्चन आपको, बाकी ये सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, शुभम स्टडी वीडियोस। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर केमिकल सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी? जो मैंने आपको बताया था, इसका आंसर कीजिए कमेंट में। और डिफाइन एडोलेसेंस, जो मैंने अभी आपको बताया इस चैप्टर में। तब तक आप एक कीवर्ड देख लीजिए और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको लेना हो तो। ये खासकर इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।